Can you see this slide? Yes, sir. Okay, so this is where we have been. Yesterday, I discussed with you the nonlinear applications of OTA, and I discussed the one circuit, that of the function generator, right? तो ये जो function generator circuit है, uh, when you see the circuit on a slide already made and prepared, उससे understanding उतनी अच्छी नहीं होती. अगर मैं इसी को if I start making on this sheet, then you will understand what actually तो उसकी understanding ज़्यादा अच्छी होती है. Let us see if I can do it for you once again. So in that application, it contains two things. One, the Schmitt trigger, right, which is comprised of the op-amp. Op-amp से पहले एक Schmitt trigger बनाया गया है, right? और ये Schmitt trigger, obviously, you can understand this is inverting type. Is that okay? Is this fine? Yes. R1 and R2. This is Schmitt trigger, right? और इस Schmitt trigger के इनपुट पे हम जो भी सिग्नल देते हैं, अगर वो UTP LTP को क्रॉस करता है तो आउटपुट जो है ये चेंज होता है. कहाँ से कहाँ तक? आउटपुट चेंजेस फ्रॉम प्लस VCC to minus VCC, provided suppose output is plus VCC, and if at the input, if the input crosses plus eta VCC, then output will change from plus VCC to minus VCC, right? And if the output is minus VCC, and if input crosses minus eta VCC, I mean, if the input becomes more than minus eta VCC, then output changes from minus VCC to plus VCC. Is that okay? This is what we mean by the functioning of this Schmitt trigger, the inverting Schmitt trigger. Is that okay? Yes, sir. Now what I'm doing, I'm going to connect here an OTA. और इस OTA का जो इन्वर्टिंग टर्मिनल है वो मैंने ग्राउंड कर दिया, और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे अब पहले OTO को अलग समझो. OTA का जो नॉन लीनियर बिहेवियर है, अब OTA के इनपुट पे आप जब भी कोई वोल्टेज देते हो तो उससे ये आउटपुट करंट जो है ये वेरी करती है, राइट? You know already that I naught is GM times of VD, and VD happens to be what? VD happens to be the non-inverting voltage minus inverting voltage, right? But just mind that this is the linear relationship. Linear relationship between output current and the input differential voltage, right? What if the input voltage VD crosses the linear operational limit? When it crosses the linear operational limit, then output current will be either plus IB or it will be minus IB. जो ये OTA का कैरेक्टरिस्टिक है, VTC, ऐसा है. अगर ये लीनियर लिमिट क्रॉस कर दे, this is the axis which is the VD and this is the I naught. So if this VD is exceeded, then output will saturate either to plus IB or it will saturate to minus IB. And plus IB means outward IB, minus IB means inward IB.
So this current is what is the IB plus IB. And when it is going to be minus IB, then it will be this way, minus IB. So when this input is more than the linear range, and what is this linear range? This linear range happens to be how much? Polo? Twice Vt positive and minus twice Vt negative. So if differential voltage is more than plus minus twice Vt, if this Vd is greater than plus minus twice Vt. By the way, what is Vt? T by 11,600. आप लोग सुन रहे हो कि मैं दीवाल को पढ़ा रहा हूँ? Yes, sir. Yes, sir. Okay, thank you. So, which actually at T equal to 20 degrees Celsius, this happens to be 26 millivolt. इसका मतलब अगर ये प्लस माइनस 52 मिलीवोल्ट से ज्यादा है, अगर ये जो रेंज है, इफ दिस रेंज इज मोर देन 100 मिलीवोल्ट, ये रेंज मानी जाती है. 100 मिलीवोल्ट से ज्यादा अगर डिफरेंशियल वोल्टेज है, then OTA will be driven into non-linearities and the output current will saturate either to plus IB or to minus IB. ठीक है? Now let me connect this point to here. ये जो input है मैंने यहाँ लगा दिया. And this means what? This means what? This means the input now given to OTA will be plus minus VCC. Or VD given to the OTA will be always plus minus VCC, which will be far larger than plus minus twice VT. Is that okay? So whenever this input is plus VCC, then you can expect outward current IB. Whenever this input is minus VCC, you can expect out the inward current IB, minus IB. Is that okay? Yes, sir. Right. So now this is constant current, by the way, constant current IB. ये IB कहाँ से मिल रही है? ये जो इनपुट पे हम करंट डाल रहे हैं, बायस करंट, यही बायस करंट है जो या तो बाहर निकल रही है या अंदर आ रही है. Just hold on, there is a call. One second.
Okay, so am I audible? Yes, sir. All right. So this OTA has got two input conditions. Either input is plus VCC or minus VCC, depending upon uh, the conditions of this binary, that is the Schmidt trigger, and then uh, output current IB can now be used to. I'm connecting now a capacitor. This capacitor, if I charge this capacitor with inward current, constant current IB, what will happen here? Voltage will rise as the polarity shown, पॉजिटिव ऊपर नीचे नेगेटिव. ये कैपेसिटर जो C है, ये इस दी हुई पोलैरिटी में राइज चार्ज होना शुरू हो जाएगा और वोल्टेज बढ़नी शुरू होगी. करेक्ट. और अगर माइनस आई बी हो, if it is minus IB, which means current like this, then the polarity would be as shown by red. और ये करंट दोनों कहाँ से आ रही हैं? So these two currents can come from here, from the output of the OTA. Right? Now suppose, imagine that output of op amp is plus VCC. Right? Suppose output is plus VCC. Now input given to the OTA is plus VCC. Current is now outward IB, and it is charging capacitor as shown by the green. Now voltage is rising. Voltage constant current से कैसे rise करेगा? Linearly rise करेगा. Very good. Now this linear rise of voltage is connected to the input. जैसे ही यहाँ की voltage, capacitor की voltage VCT, ये जो VCT है, जैसे ही it reaches where? Plus eta VCC. ये जो binary है, this binary changes from plus VCC to minus VCC. और जैसे ही ये चेंज होता है, वैसे ही ये जो आउटवर्ड करंट है, अब ये इनवर्ड करंट हो गई. नाउ इट हैज बिकम इनवर्ड करंट आईबी. और कैपेसिटर की अब ये वाली चार्जिंग शुरू हो गई, जो रेड वाली है. और जैसे ही इनपुट पहुंचता है फिर माइनस ईटा वीसीसी पे, वैसे ही आउटपुट चेंजेस फ्रॉम माइनस वीसीसी टू प्लस वीसीसी, which is what was described in this diagram. Can you see that? The output here is shown by the blue line. Output, this output I'm talking about, this output, and the capacitor voltage, that is this voltage, VCT, is shown by the pink curve. So obviously the voltage changes at output will be between plus VCC and minus VCC, and the input changes here will be between plus minus eta VCC. और eta की वैल्यू ये R1 R2 से तय होती है, which is equal to R1 by R1 plus R2. Is that fine? Yes, sir. Now, if I ask you to find out this T1, ये T1 कैसे तय होगा? How will you find out T1? T1 कहां से कहां तक जा रहा है? Right? So सबसे पहले
अंदाज से बना रहा हूँ, दोनों इक्वल होना चाहिए, राइट। सो ये जो लेवल है ये क्या है? दिस लेवल इज Plus minus VCC. right. So this is voltage and this axis is time. So here you can write plus minus VCC. और इसमें आप एक लेवल क्रिएट कर दो, ऊपर प्लस ईटा वीसीसी का और नीचे माइनस ईटा वीसीसी का. And then you can think of, you let us say, red pen. It goes from linear charging. Right. So you are going to find out this T1 and this T2. ये बहुत आराम से पढ़ने का सब्जेक्ट है. हम जिस तरह जल्दी में पढ़ना चाहते हैं ऑनलाइन में और बिना इंटरैक्शन के, बिना क्रॉस क्वेश्चनिंग के, T1 कैसे तय होगा बताओ? There is one capacitor which is charging, and this capacitor is charging with what? Plus minus IV current, right? Is that okay? And the capacitor voltage VCT is given as what? 1 over C integral I dt, because I is constant. I is how much? IB divided by C into T. This is now VCT, right? Here this is minus eta VCC. Here this is plus eta VCC. ठीक है? If I consider, let me now इस पॉइंट को मैं A लिख देता हूं, इस पॉइंट को B लिख देता हूं और इस पॉइंट को C लिख देता हूं. For part AB, how much is the total voltage rise of the capacitance? 2 eta VCC. 2 eta VCC, right? तो अगर मैं ऐसा मान लूं, थोड़ी देर को ऐसे मान लो कि कैपेसिटर इज चार्जिंग फ्रॉम 0 to 2 eta VCC. ठीक है? और फिर ये टाइम हमें निकालना है T1. So at t equal to 0, VCT is 0. Here this axis is what? This axis is VCT. So VC0 is 0 and VCT1 is 2 eta VCC, right? So this is now 2 eta VCC equals to IB divided by C times T1. Is that okay? Is that fine? Yes. Yes, sir. So can you find out now T1? T1 पता लग गया यहाँ सीधे. T1 is twice eta VCC times C divided by IB. One second.
आईसी तो सारी सरफेस माउंट डिवाइस हैं। सरफेस माउंट डिवाइस, अब वो तोशिबा की पता नहीं पेटेंटेड आईसीज होंगी, पता नहीं वो बन रही नहीं बन रही हैं, आती होंगी नहीं आती होंगी, ये तो कुछ मॉडलों में सारे स्पेयर पार्ट सेम होते हैं, कार्ड बिल्कुल सेम, इसका भी अगर इनके पास और भी है, पर उनमें क्या कि एलटीआई कम है, यार भाई अगर नहीं चला वहां जाने के बाद फिर दिक्कत होगी, यहाँ चल रही है वो कुछ मॉडलों में फर्क होता है वो सॉफ्टवेयर का। कोई नया कार्ड किसी नए टेलीविजन का अगर लगा सको तो वहां अगर चल रहा हो। ठीक है ठीक है। नहीं नहीं नहीं, पुराने कार्ड नहीं चाहिए, पुराने कार्ड बिल्कुल नहीं चाहिए। ठीक है हाँ। तो 2 दिन तो बहुत ज्यादा होता है राजीव। ऐसा ना हो कि रिपेयर चक्कर में खराब हो जाए, मुझे चिंता इस बात की है। चलो ठीक है। ओके। Sir, you are not audible. Now is it okay? Can you hear me? Yes, sir. Okay, Yes, so sir. T1 can be found out like this. And similarly, because the negative current is also IB only, so T2 will also be the same. I hope you will agree. T2 will also be the same. Is that okay? Yes, sir. And T1 plus T2 can be added twice of this, right? So then you can find out the frequency. तो किस फ्रीक्वेंसी की ट्रायंगुलर वेव जनरेट हो रही है ये आप बड़े आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। एंड दैट फ्रीक्वेंसी, बिकॉज T1 एंड T2 इज डिपेंडिंग ऑन व्हाट, इट इज डिपेंडिंग ऑन, ध्यान से देखो, इट इज डिपेंडिंग ऑन व्हाट, ऑन IB, ऑन VCC, ऑन C एंड ऑल्सो ऑन ईटा। तो इन चारों चीजों से हम इसकी फ्रीक्वेंसी को वेरी कर सकते हैं, either by varying eta or by varying VCC. Normally VCC को हम वेरी नहीं करते, बायस वोल्टेज इज केप्ट कांस्टेंट, राइट। कैपेसिटेंस को वेरी कर सकते हैं, ईटा को वेरी कर सकते हैं, और वेरी कर सकते हैं बायस करंट को, जो इनपुट पे करंट जा रही है। यहाँ एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है आपको नोट करने की, जो OTA 3080 है उसकी जो बायस करंट है, दिस बायस करंट IB हैज अ मैक्सिमम रेंज। IB max for OTA 3080 happens to be 1 milliampere. You cannot increase IB beyond 1 milliampere. So that will obviously limit the transconductance value in the linear range, and that will also limit the ये जो non-linear application है इसमें भी अगर इस IB को हम maximum 1 milliampere हो जाए तो that will limit the T2, that will limit the T1. Is that okay? ठीक है। Yes, sir. तो स्लाइड में पढ़ना और कोई बना के पढ़ाए, वो दैट मेक्स थिंग्स pretty different, which is what I wanted to. Similarly, if you consider the, let me take you to slide 7. Slide 7 में आपने ये देखा होगा 555 टाइमर IC का इंटरनल सर्किट डायग्राम देखा था, और हमने इससे बनाया था एक ये अस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर। ठीक है। अब इस अस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर में पहले 555 टाइमर IC को देखो आप, तो इट हैज 3 5K resistors. Okay, then it has 2 comparators, comparator 1
and comparator 2, और इनका आउटपुट जाता है एक RS फ्लिप फ्लॉप को, R here, S here. This is Q, and that's where you get Q bar. Q bar output goes to another inverting buffer, right? Now, this is connected here, whereas this is connected here. And ये बाहर निकल जाता है, ऐसे ही ये बाहर निकल जाता है. So plus, minus, plus, minus. दो कंपैरेटर्स हैं, ठीक है. और यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर है, NPN ट्रांजिस्टर है, और इसका जो आउटपुट है ये ऐसे बाहर निकल जाता है. दिस इज पिन नंबर 7. इसको इनपुट मिलता है क्यू बार से, राइट. दिस इज ग्राउंड, दिस इज पिन नंबर 1. तो ये डिफरेंट पिन्स हो गए. और अब इसकी बाउंड्री आप बना सकते हो. That's the 555 timer IC, right? If I number these pins, so this is pin number 1, correct? That this is pin number 2, this is pin number 3, this is pin number 4, this is where you have pin number 5, pin number 6, 7, pin number 8. ओके अब इस इनके नाम हैं. 3 इज आउटपुट, 3 इज आउटपुट. मैंने आपको स्लाइड भेजी हुई है, आप नाम देख सकते हो उसमें, ठीक है. इसके अराउंड जब हम सर्किट बनाते हैं और स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर का, तो हम पहले 2 रेसिस्टर लेते हैं, R1, R2, और एक लेते हैं कैपेसिटर, ठीक है. और ये जो कैपेसिटर का वोल्टेज है VCT, ये कंपैरेटर के जो 2 कंपैरिजन पिंस हैं 6 और 2, इनको लगा देते हैं, राइट. और ये जो है दिस जंक्शन ऑफ RA and RB, this goes to pin number 7, right. And then we have this connection, 8 and 4 together, it goes to plus VCC, and from the same place we connect this thing. That's it. This is the stable multivibrator. And how it works, I have explained you last time, correct? If you want repeat of the same, I can do that. Or maybe we will take up the new topic, and then if you want at the end of the class, I will repeat this thing. Okay, so coming back to slide 8. Now this is the log and anti-log amplifier. What we do, we make use of the transistor in making the bipolar transistor in making the log anti-log amplifier. And what equation of transistor we make use of, that equation is this one. I hope you remember this.
that collector current is I naught e raised power VB by VT. ये आपको याद है? Is this okay? Yes, sir. Okay. अब इसके ठीक नीचे की सर्किट देखो आप. This one. Here, the op-amp is assumed to be ideal or negative feedback path. I have connected a bipolar transistor, NPN transistor, right? You can see the virtual ground at the inverting input. Now, what will be this IC current? Current through R, this IC. इसको IC में क्यों लिख रहे हैं? Because the collector current is coming from here only. This current, actually, it goes like this. Therefore, I'm calling it IC. Is that okay? Yes, sir. And IC is what? IC is VI by R. And from this equation, you can get this equation. Is that fine? Yes, sir. Yes, sir. और इसी को हम अगर rearrange कर दें तो I get this, that VI by I naught into R is this. And if I take natural log of both sides, I get this. And from this, I can write V naught as what? इस इक्वेशन को फिर से अरेंज करो तो ये मिल जाता है इक्वेशन x. V naught is minus Vt natural log Vi by I naught into R. So can you see now output voltage is natural log of input voltage. Is that okay? So this circuit is nothing but a very basic form of the log amplifier, natural log amplifier. Is that fine? Bolo? Minus Vt natural log Vi by I naught into R. Are you people there? Yes, sir. Okay. So, but only problem in this equation X is that there are two things which are making it not a very good log amplifier. What are those two things? That there is this Vt, which is highly temperature dependent, and then this I naught, which is also highly temperature dependent. So I naught and Vt, they make V naught temperature dependent. किसी तरह से ये इक्वेशन X में Vt और I naught को हम गायब करें तो हमारी प्रॉब्लम थोड़ी सी ठीक हो जाए. Let us see if we can do it. इस सर्किट में देखो आप. Before I discuss the left part, left means this part on the left of this dotted line. है ना? इस right part को देखो. Right part is what? This right part is VO equals V1 minus V2. Is that okay? It is nothing but a difference subtractor. Because all resistors are equal, so VO will be V1 minus V2. Is this agreeable? हम पहले ही पढ़ चुके हैं. Right? Yes, sir. Okay, so VO is V1 minus V2. अब let us see what is V1 and what is V2. ये V1 V2 जैसे ये इधर एक सर्किट है लेफ्ट वाली लॉग एम्पलीफायर की, इसी का दो हमने बना दिया. So V1 will be minus Vt natural log Vr by I naught R1, equation 2. And V2 will be minus Vt natural log Vi by Ro R1.
ये जो यहाँ निकाला था हमने इक्वेशन x, दैट VO इज माइनस VT नेचुरल लॉग VI बाई I नॉट R, इसी से हमने V1 V2 लिख दिया। एंड बिकॉज VO इज V1 माइनस V2, सो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 3 करते ही आई गेट इक्वेशन 4, which is VT natural log VI by VR. Is this okay? Yes, sir. अब आप देखो, if you compare equation X and that with equation 4, you see at least I naught has vanished. यहाँ जो I naught था, अब वो यहाँ I naught खत्म हो गया। अब सिर्फ VT बचता है जो कि टेम्परेचर डिपेंडेंट है ना? Yes, sir. And this is also log amplifier. Equation 4 is also a log amplifier which represents this circuit containing 3 op amps, 2 bipolar transistors and 6 resistors. अब देखते हैं वो कैसे ठीक किया जाए जिसमें कि बाय द वे वो जो 3 op amp उनको हम 2 में कन्वर्ट कर सकते हैं। वो इस सर्किट से 2 op amp से भी हम बना सकते हैं। I can realize the same equation 4. This equation 4 can be realized only with 2 op amp also. यहाँ पर तो हमें 3 लगा रखा है, तो 2 op amp की सर्किट वो यहाँ पर है, देखो इससे। कनेक्शंस थोड़े से कन्वोल्यूटेड हैं, आप उनको ध्यान से देखिए कैसे बनाए गए हैं। सो देयर इज दिस R2 और RT लगे हुए हैं और इनके इस जंक्शन पॉइंट से इस तरह से Q2 का बेस कनेक्टेड है और फिर इस तरह से आप देखो Q1 का एमिटर और Q2 का एमिटर और किस तरह से दोनों ऑप एम्प कनेक्टेड है। यू कैन सी नाउ, कैन यू सी दैट द कनेक्शंस। अब इसमें हम क्या करेंगे, देयर इज वन लूप देखो, इस ग्राउंड से शुरू करो, ग्राउंड ऑफ ट्रांजिस्टर Q1 विच इज बेस। यहां शुरू करके लूप का हमने डायरेक्शन ब्लू लाइन से बनाया है, VBE1, then there is another voltage VBE2 and then a voltage V and again goes to ground. So from ground to ground it's closed loop now through RT. Loop close हो गया। From base of Q1 through emitter of Q1, then we reach to emitter of Q2, then through base of Q2 we go to the junction V and back to ground through RT. लूप समझ में आ रहा है? क्लोज लूप। इस क्लोज लूप में KVL लगा दो। अप्लाइंग KVL is equation 1, VBE1 minus VBE2 plus V equal to 0, VBE1 minus VBE2 plus V equal to 0. Is that okay? Equation 1 is okay? बोलो। Yes, sir. yes, sir. डिवाइडेड पार्ट ऑफ V नॉट, ये जो V यहाँ पर है, ये V जो है पोटेंशियल डिवाइडर है। V नॉट को अगर पोटेंशियल डिवाइड करो तो V इज व्हाट, V इज इक्वल टू RT डिवाइड बाय R2 प्लस RT। ये पोटेंशियल डिवाइडर तभी वैलिड है जब इधर से जो करंट फ्लो कर रही है वो करंट बहुत नेग्लिजिबल है। और ये क्यों हम नेग्लिजिबल मान रहे हैं? बिकॉज द करंट गोज टू द बेस ऑफ Q2 और बेस की करंट बहुत स्मॉल होती है। So if I ignore this base current, I can write V equal to this times V naught, which is what is written in equation 2. ठीक है? अब VI by RI, ये जो यहां पर II है, this II, ये तो पॉइंट वर्चुअल ग्राउंड है। So II is VI by RI, right? Which is II, which is actually IC of that transistor, which is I naught, equation 3. This is also okay, transistor equation. Then you can write VR by RI. Here, the second op amp with this one.
This is also virtual ground. So VR by Ri is IR, which is equal to this equation 4. And from 3 and 4, I can get VB1 and VB2. ये VB2 दूसरे ट्रांजिस्टर का है और VB1 यहाँ पर पहले ट्रांजिस्टर का है. So from 3 and 4, I can get VB1 is this and VB2 is this, which is very simple, straightforward. अब VB1, VB2 और ये जो हमने V निकाला हुआ है, इन तीनों को इस इक्वेशन 1 में KVL में फिट कर देते हैं. When I write and manipulate, I finally get V0 as this. अब इस V0 में देखो, I0 कहीं नजर नहीं आ रहा, which is temperature dependent. ठीक है, VT जरूर यहां पर दिख रहा है और साथ में RT भी दिख रहा है, राइट? और हमें पता है कि VT is what? VT is T by 11,600. मतलब जैसे T बढ़ेगा वैसे VT भी बढ़ेगा. अगर हम RT को भी ऐसा ही ले लें कि जिस रफ्तार से VT बढ़ रहा है टेम्परेचर के बढ़ाने से, वैसे ही RT भी बढ़े, तो ये सब मिलकर के इतना पार्ट टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट हो जाएगा. एंड देन इक्वेशन 7 कैन बी मेड fully temperature compensated log amplifier. Is this agreeable to you? Is this convincing? If I choose this RT एक ऐसा हम डिवाइस लें, एक ऐसा रेसिस्टर लें जो कि टेम्परेचर की वजह से रेसिस्टेंस बढ़े और उसी रफ्तार से बढ़े जैसे ये VT बढ़ रहा है, in the same proportion, which is possible. Temperature dependent resistor and VT. Then equation 7 can be made fully temperature compensated. And this circuit that you see here can be called as what? 2 op-amp compensated log amplifier. Is that okay? Is that okay? Yes, sir. Very good. अब इसी जो ऊपर की सर्किट है ना, this circuit itself can be made anti-log amplifier by swapping the input and output. देखो थोड़ा सा चेंज कर दिया इसमें, यहां इनपुट लगा दिया और यहां पर आउटपुट ले लिया, और वैसे ही वही लूप इक्वेशन लिखा हमने, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, 3, 4 और 1 में मर्ज कर दिया. And then when I write, finally, I get V0 equals to, as equation 6, is VR e raised power minus, can you see that? E raised power this much. So V0 is some constant, e raised power what? Something where you have Vi divided by something. So this is called anti-log amplifier, exponential amplifier or anti-log amplifier. And this is also, derived from the temperature compensated 2 op-amp log amplifier. ये जो log amplifier है, इसी का बस हमने क्या किया, यहाँ पर डिस्कनेक्ट करके और यहाँ हमने Vi लगा दिया. ठीक है, आप देखो नीचे, और ये जहां इनपुट था उसको कनेक्ट करके आउटपुट से फीडबैक लगा दिया उसका. सो दैट मेक्स इट ओके. इस सर्किट में आप देखो ध्यान से, लॉग एम्पलीफायर कैन बी यूटिलाइज्ड टू रियलाइज मल्टीप्लायर. टेक one log amplifier, another log amplifier, give input, you get k log V1, you get k log V2, add them, then you get k log V1 into V2, और इसका आप एंटी लॉग ले लो, then you get what? Some k2 times V1 into V2. So that makes it a multiplier. Is that okay?
So log amplifier can be used to realize a multiplier. Also it can be used to realize divider. Divider में क्या करना होगा, यहाँ पर बजाय समर के हमें सबट्रैक्टर लगाना होगा. So then that will make the divider. So log anti-log amplifiers can be used to realize multiplier and divider. Is that okay? Is that fine? Yes, sir. Perfect. So now I'm stopping, but I'm also giving you another this thing. This I have already uploaded in the class, both class. This is a tutorial on OTA. ये बहुत ही पॉपुलर एक पेपर है, ट्यूटोरियल पेपर है, रिटन बाय गैगर एंड सेनेंसियो, राइट. इन लोगों ने 1985 में ट्यूटोरियल लिखा था IEEE सर्किट एंड डिवाइसेस मैगजीन में, राइट. सो दैट आई हैव गिवन. इसमें आप पूरा पढ़ोगे बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा. इसमें काफ़ी कुछ चीज़ें मैंने बता रखी हैं, जो नहीं बताई हैं आपको पढ़ के समझ में आ जाएगा. इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. ठीक है. इसमें आपको ये सब दिखेगा कैसे डिफरेंट टाइप के फिल्टर बनाएं, और आपको इसमें ये भी दिखेगा हाउ टू मेक द बायस करंट सेम इन OTA टू रियलाइज मैच्ड OTAs. देखो यहाँ पर, कैन यू सी हियर, सी वाले सर्किट में यहाँ पर जो इस R के थ्रू जो करंट आ रही है वही यहाँ पर जा रही है, वही यहाँ पर है, वही यहाँ पर है. और इससे हमने इन 3 OTA को बायस कर दिया. ओ बाय द वे, ये PNP मिरर्स हैं, तो ये सॉरी, ये करंट नीचे नहीं आ रही है, ऊपर जा रही है, तभी तो बायस होगा. सो दिस करंट इज लाइक दिस, सो इट गोज लाइक दिस, like the bias current is always inward. So because this is current mirror, so you have the same current. So 3 OTAs will have GM same, identical GM. कई बार ऐसी रिक्वायरमेंट आती है कि आप सेम GM रखो, है ना. मैच्ड OTA की बात मैंने की थी पिछले क्लास में, if you remember. So that's how we create matched OTA. बायस करंट के लिए हमने ये अरेंजमेंट कर लिया. इसके अलावा what else we require? We require to provide plus minus VCC to all the 3 OTAs, plus minus VCC. So minus minus सारे एक साथ कनेक्ट करके कनेक्ट कर दो माइनस VCC से, प्लस प्लस सारे एक साथ कनेक्ट करके कनेक्ट कर दो प्लस VCC से. अब OTA की बायसिंग हो गई. OTA को हमने बायस करंट भी दे दिया सेम. अब इसको हम जिस किसी भी सर्किट में लगाना चाहें 3 OTA को, I can connect wherever I want the same, like maybe in this filter, or maybe in this filter again I can use 5 OTAs, or here, or maybe here, right. So now I stop. I request all of you to please mark your attendance. आज तक हमने जो भी पढ़ाया है